lie down in a comfortable position, everybody. And take a deep breath in. एक लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलीज करेंगे। Breathe in through your mouth and exhale through your mouth. फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। Breathe in through your nose and inhale all the positive energies, positive light, white light. And when you exhale, exhale all the negative energies through your mouth, slowly and steadily, as if you are having a spout in your mouth. This meditation is to heal your physical element or any of your mental issue, the trauma that you're going through, any emotional issue that you're presently going through. Set an intention to which part of your problem needs to be healed. Set your awareness to that particular issue. If it is your physical issue, bring your awareness to the body part. And if it is your financial, mental, emotional, relationship, career, any kind of problem or issue, bring your awareness there. And now, once your awareness is set, you have to imagine a golden light or a positive white light coming from the universe and entering into your crown chakra. फील कीजिए, महसूस कीजिए एक गोल्ड कलर का व्हाइट लाइट यूनिवर्स की ओर से आ रहा है और आपके क्राउन चक्रा को टच कर रहा है। This bright light is very positive, very affirmative, at a very high frequency, entering into your body through your crown chakra. And slowly and steadily entering into your body, touching your third eye, cleansing your third eye, making your third eye activate, balance. Then slowly moving towards your throat chakra. Slowly moving towards your heart chakra, cleansing your heart chakra, balancing it, activating it, energizing your heart chakra. Now moving towards your solar plexus.
slowly and steadily moving downwards towards your sacral chakra, towards your root chakra, towards your pelvis region, your thighs, knees, calf muscles, towards your feet, आपके पैर तलिए या सोल चक्रा तक ये सारी एनर्जीज फैल रही है। फील करेंगे इस इमोशन को, इस एनर्जी को, इस ब्राइट लाइट को आपके एंटायर बॉडी पे स्प्रेड होते हुए। And now you will all bring your awareness to that particular issue. Either it is one of your body part where you're facing a physical ailment or a physical problem, physical challenge, or the mental or emotional or relationship issue that you are having in your life. Bring all your awareness to that particular issue. Either it is your physical issue, physical ailment, any kind of trauma that you have been going through, or your mental issue, the career challenges that you have been facing in your life, the monetary challenges that you have been facing in your life, the relationship issue. Bring all your awareness to that particular body part or the situation in your life. Feel that particular emotion, situation, or physical ailment getting healed through this golden light, white light, positive light, which has been coming from the universe towards you continuously. आप अपने जीवन में इस इशू को हील होते हुए देखेंगे, उस गोल्डन लाइट से, उस वाइट लाइट से जो यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से आपके तरफ आ रहा है। Put your awareness in the heart center. हमारा सारा ध्यान आपके हार्ट सेंटर पे लेके आए। और क्योंकि आपकी ये तकलीफ हील हो रही है, आपको बहुत खुशी फील हो रही है। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज योर इश्यूज आर गेटिंग हील्ड। यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल द ट्रॉमास, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, एंड बिकॉज नाउ यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग हील्ड एंड यू आर गेटिंग हैप्पी। और क्योंकि आप खुशी फील कर रहे हैं, अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेकर आएंगे, एक प्यारी सी स्माइल लेकर आएंगे आप अपने चेहरे पे। Put all your awareness to your heart center and feel as if you are getting healed completely. Start to feel the emotions. Start to feel the emotions. How happy you are feeling when you are getting healed. Imagine the situation in your life where there are no problems, where there are no issues. You are completely a happy soul. आप बहुत खुशी फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आपके जीवन में जितनी भी इश्यूज हैं, सारी इस गोल्डन लाइट के जरिए हील हो चुकी हैं।
एक बार आप अपने पूरे शरीर को स्कैन कर ले, अपने सूक्ष्म शरीर को स्कैन कर ले, अपने एनर्जी बॉडी को स्कैन कर ले। देखिए, अगर कहीं पे कोई इश्यू होगा तो उसे इस गोल्डन लाइट के जरिए हील कर ले। काइंडली स्कैन योर एंटायर बॉडी वंस, your energy body, your subtle body, and see wherever you find any kind of blockage or issue or problem in your life, try to heal it completely through this golden light coming from universe. And because now you're getting healed, you're feeling very happy, contented in your life. Allow this energy to expand out of your body. Allow this energy to expand out of your body completely in such a way that in any case, even if any negative energy wants, they cannot touch you. अब आप एक बहुत सुरक्षित एनर्जी बॉडी में हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी चाहे भी तो आपको छू नहीं पाएगी। आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो। फील completely happy, and because now you are completely happy, feel the essence of joy. See how you celebrate your life when you have no issues in your life. How do you celebrate your life? Feel the essence of joy with your family, with your friends, with the Almighty in your life, with your Ishta Devata, thanking him or her, with your Kula Devata, thanking him or her. Do not forget to pray gratitude to your spiritual guides, your Ishtadev, your Kuladev, your masters, your ancestors, your spiritual animals, angels, archangels who have been consistently helping you out come out of all the situations, problems, issues of your life. Feel their energies besides you, that they have been consistently helping you out of the situation. Pay gratitude to them, thank them, and with this slowly getting healed with this positivity, on my count of 1 to 5, slowly open your eyes. 1, 2, feel your hands, feel your legs. अपने हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को घुमाएं। 4, 3, 4, feel your surrounding, your bed or your chair. And on my count of 5, open your eyes slowly and steadily. 5. Open your eyes. Slowly open your eyes. Take a deep breath and slowly open your eyes. बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत शांत फील करना स्टार्ट करें। Thank you everybody for allowing me to heal your emotional, mental or physical issues. Thank you God for allowing me to become the medium of healing humankind. Atma Namaste. Yes. Hi all. If somebody wants to switch on their videos and give the reviews, please. Anybody?
Preeti. Good afternoon. Hi, Ishan. How are you? I'm fine. I'm much better than before. How are you? Yeah, good, good. Doing good, Ishan. Thank you. Awesome. So yeah, it was amazing. It was a very good experience. As it is, again, I was 1 or 2 steps ahead. But one thing that I can point out today, when you told us to bring our focus on the heart center, heart chakra, there I saw this flame sort of thing. I don't know what it was. But yeah, it was there, and it was like changing color, like the entire body was changing color with that. So usi color में like white light, so white flame, blue light, so blue flame, violet, violet. It was like that, and yeah, it was cool. It was nice. It was light, and I could connect. I could again imagine after a long time I'm meditating again because beach में I couldn't connect a lot of times. So Yeah, that was even nice. I was But busy, one quite thing, my busy. body was moving. Okay. My body was moving back and forth like वो जो होता है ना जिसके हम swing करते बैठे बैठे आगे पीछे, that was happening automatically throughout, like it wasn't resting, and my eyes were opening a bit बीच में, otherwise it was cool. Okay. Yeah. Okay. Great. Anybody else? I'm feeling very light, relaxed. Great. Initially, I could feel some stress on forehead and all, but slowly, as the meditation ended, I'm feeling very relaxed with the body. I like feeling like things already solved or something, like things very feeling very light now. Yeah, yeah. Your issues are 100% getting to be solved very soon. Do not worry. Thank you. Thank you. Yes. Anybody would want to take a moment? If you want any kind of remedy regarding anything, na, you can let me know. I'll come across it and I'll then help you out. Because I have multiple things, but on what basis I should, give the remedies, I'm not sure this time. थोड़ी सी क्यों? Automatic start. Hmm? Why? I don't know, it just started by itself and it ended by itself, so it's So nothing planned. don't end it until and unless you are getting the clarity, right? जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, उसका क्लैरिटी जब तक नहीं मिल जाता, उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता, कीप ऑन डूइंग इट ना. You're talking about the camphor one, right? कैम्प, हाँ, मतलब वही जो साउथ ईस्ट वाला दिया मैंने जो कहा था आपको, That, okay. वो तो करो. वो एक एक ही एक से रेमेडी है ना, जो अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको एक पहली बात तो काफी सारे आपके रोड ओपन हो जाएंगे. उसके अंदर स्लोली एंड स्टडीली यू कैन स्टार्ट विद अनदर, जो मैंने आपको पॉपी सीड्स का बताया है और खजूर का बताया है एंड ऑल. तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज आप कर सकते हैं, बट शुरुआत एटलीस्ट दिए से करो, क्योंकि ना आपकी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको लाइफ में. Ma'am, मैम practice जॉब daily, ma'am. मैनिफेस्टेशन कोई तो भी बोल रहा है. वन बाय वन बोलो. हाँ, खुशबू बोलो. मैम वो दिए का रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज लगा रहे हैं मैम. हाँ, गुड. Yes, गुड. गुड. थोड़ा वक्त लगेगा ना, बट हो जाएगा. देखो उसके जो फल है ना वो बहुत अच्छे मिलते हैं. वक्त भी लग सकता है, बट कीप दैट ma'am. पेशेंस एंड दैट पॉजिटिविटी, राइट, कि वो होगा करके ठीक. दैट इज द रीजन आई कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट पर्टिकुलर रेमेडी. ओके. यस बनीता, प्लीज. मैम जॉब मैनिफेस्टेशन रेमेडी आप बता दीजिए. जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगी. एक ओके तो मैम. देखिए, आप बनीता दिया तो करो आप. ओके ठीक मैम, है. वो आपने जो एक मंत्र दिया था उस दिन वो वाला कर रही हो कौन सा? कुछ. लक्ष्मी गायत्री मंत्र. हाँ हाँ हाँ, हाँ. बहुत काम करता है वो. अगर आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है उसको. मैं 21 टाइम्स ही कर पाती हूँ, क्योंकि बाकी भी मंत्र जाप काफी होते हैं, राइट. तो मुझे उतना वक्त नहीं हम्म. मिल पाता, इसलिए मैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र 21 बार ही कर पाती हूँ. अपार्ट फ्रॉम शाल्वेक एंड ओम नमः शिवाय, दुर्गा एंड ऑल दैट. सो आई हैव अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस दैट आई फॉलो.
So that is the reason only 21 times I do. But if you're concentrating only on one particular issue, go with Lakshmi Gayatri mantra for 108 times. 10 minute लगते hardly. It's a very small mantra. 10 minute लगते हैं every day. Ma'am, I'm trying it for 21 times. हाँ, तो फिर तो 5 मिनट में ही हो जाएगा. 5 मिनट में, 4 मिनट में हो जाएगा. इट वर्क्स वेरी गुड. सच में मैं भी काफी समय से उसको फॉलो कर रही हूँ और इतने अच्छे चेंजेस आए लाइफ में. और मैं कभी भी मतलब किसी को पूछती हूँ व्हाट शुड आई डू, तो द फर्स्ट थिंग दे शेयर इज लक्ष्मी गायत्री मंत्र. दिस इज हाउ Okay. इट इज. ओके, निहारिका मैम, यू वर अबाउट टू टेल मी समथिंग, राइट? नो? ठीक है. ओके, सो लेट अस वाइंड अप विद. ओके, ठीक है. With your permission, then we will close the session. And next weekend, I'll come with some remedies, Swarvigyan remedies basically, and some new sessions. Sorry for the day that I am not having remedies today, but next we'll come up with new good remedies. Okay? Cool, Okay. sure. Thanks, Preeti. Yeah. Thank you so much. Thank you everybody for Thank joining you, the ma'am. session today. God bless you. Have a good day. Have a good God evening. bless you, ma'am. Thank you. Bye.